Thank you for having me. सर आपका सिंबल खुराम, देखते वो मैं देखता हूँ ना डीपी, तो मुझे सचवाला जी का चैनल याद आता चलो किसी बहाने आप याद कर लेते हैं. That's good. Silo Saip and Khuram, thank you for having me. And I just wanted to know कि इस जो आप लोगों का चैनल है उसका एम क्या है. है। एम क्या है मतलब समझा नहीं सर, आप बोल रहे हैं कि हमारे चैनल का एम हमारे अबाउट पेज में है ऑलरेडी लिखा हुआ. अच्छा, I haven't read it, so मैं इसलिए पूछ रहा You था. can just go and read our about page and you'll find out what we intend to do. और अच्छा, हमारे चैनल का नाम भी आपने देख लिया होगा, इट इज डिस्टोपिया टू रीजन. of course, Dystopia to Reason is a very good name. And um, आप जो है, it seems like, if I'm not mistaken, you are promoting atheism. Is that right? You can say that we are also promoting religious polemics and philosophical and scientific musings as well. आपने वैसे राज भाई ने जो बनाया जेम्स वेब टेलीस्कोप पर, जो उसने उन्होंने पार्ट 1 बना के आपने देखा है, इट वाज ब्रिलियंट. इट It's वाज रियली brilliant. ब्रिलियंट. Of course, I'm all for science. In fact, आपने telescope की बात की. I say, the biggest contributor. यार मैं Can you hear me? या आई विल जस्ट Yes, पुट sir. दैट. अच्छा याद आया मुझे, मैं वो यार वो लिंक भी पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ. जेम्स वेब पे जो उन्होंने डाला मैं चैट में डाल देता हूँ. ओ शिट. ओके सर, कंटिन्यू सर. Okay. कंटिन्यू प्लीज. मैं ये कहता हूँ कि the biggest contributor to today's technology is actually one of the biggest, not the biggest, but one of the biggest, is the lens. लेंस ऐसी चीज है जिसकी वजह से हम इस स्टेज तक पहुंचे हैं. We explore the outer space because of the lens. We go deep down in the sea because of the lens. Today we are chatting again because of the lens. Lens is the biggest contributor to today's technology. Of course, software hai. This is the hardware part. Then you have software. You have all the other elements. Acha, to I'm all for science. All for या science. बट राइट लेंस एट राइट टाइम आल्सो, मे आई से दैट. क्योंकि कहीं कॉन्वेक्स लेंस की जरूरत है और हम कॉनकेव लेंस लगा दिए तो फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा. सही है ना भाई? At the end of the day, it's the lens. it Whether has it's to be concave, it has to be the right lens, sir. I agree to that. That is right, right? So, yeah, I can, of course, and I also agree कि religious में ये होता है कि गलत लेंस इस्तेमाल कर लिया जाता है from time to time. So that makes a problem. My thing is that people who are self-made, they don't maybe need any सहारा. खुदा का सहारा नहीं चाहिए उनको. गॉड का सहारा है. Call him भगवान, call him Yahweh, call him Allah, call him whatever you may. लेकिन जो बेचारा गरीब आदमी है, या the one who's struggling, at the end of the day he doesn't know what to do in spite of all his efforts, वो बेचारा कुछ कर नहीं पाता, तो then he says खुदा की मर्जी है यार, नहीं हो रही. तो that actually gives him some sort of a cushioning मिल जाती है उसको. Instead of going insane, he become, एक comfort मिलती है उसको वहां पे, यार चलो खुदा की मर्जी. And if you take that factor away from him, तो chances ये हैं कि we'll have a lot of people who will end up in wards, psychic wards. So 90 to 95% of the people are actually doing that. They are just following God because उनको किसी किस्म का comfort मिलता है. And I just don't want any channel or to take away that hope from these guys. Self-made आदमी के लिए it doesn't matter. He's a self-made man. He doesn't need God. But for this 90 or 95% people, they need some sort of cushioning, and that cushioning, I would say, is religion. Whether it's the wrong religion, whether it's the right religion, but there's a comfort there. What do you have to say? Psychoslide, do you want to or should I? You can start. Yeah. Okay. Thank you very much, sir.
Thank you very much. As far as I understood, what you mentioned, point to point, is well, I agree to most of the things that you say. My point of reasoning, or my chain of thoughts, is completely different. Uh, when I was younger, as you might say, when I was younger, what I found out was this. I used to study science. I was a science student, very much interested in that, and I got quite deep into it. So when I got the knowledge, what I found out was that what the set of realities I grew up with were entirely different from how the world operates right now. But I found out this: nothing that we had succeeded in doing at that point of time had been outside of this universe, or outside of this the concept that we know now as matter. लेकिन अब ये situation है कि we have theoretically and practically been able to produce antimatter in very small quantities with the large hadron collider concept, the LCH. तो मेरी ये thinking अब हो गई कि right now we are transgressing even the concept of matter, और जो कुछ भी हमारे पास है reality के नाम पर, it is just our observation. तो इस observation में it would be a much better option that I let my mind and my own brain discover. और अगर कोई रिलीजन मुझे इस चीज को डिस्कवर करने की फ्रीडम हमेशा देता है किसी भी चीज को, देन आई एम ऑल फॉर इट. बट द मोमेंट द क्वेस्ट फॉर डिस्कवरी एंड द क्वेस्ट फॉर क्वेश्चनिंग, इसको अगर प्रिवेंट करते हैं, स्टॉप कर देते हैं, देन दैट बिकम्स अ रोड ब्लॉक. तो दिस इज माय ओपिनियन सर. कुरान सर, आप भी इसको बताएं. जी, मैं सिंपल एक वोल्टेयर का कोट बोलूंगा आपको. ए पर्सन हु बिलीव्स इन एब्सर्डिटी वुड कमिट एट्रोसिटीज. ये वोल्टेयर ने बोला था एक जमाने में. गरीबी का मुझे मतलब ये नहीं है. पर्सन हु बिलीव्स इन एब्सर्डिटी वुड कमिट एट्रोसिटीज. जो एब्सर्ड चीजों को मानता है वो एट्रोसिटीज करेगा. दुनिया में जो इवल थॉट्स रखता है ना, वो ज्यादा डेंजर नहीं रहता. जो सबसे बेवकूफ है ना, वो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, अपने आप का भी, अपने घर वालों का भी और समाज का भी. बेवकूफ इंसान ज्यादा डेंजर होता है, ये बात याद रखिए सर. और मजहब वही काम करता है, लोगों को बेवकूफ बनाता है. मजहब जो है एक एब्सर्ड आइडियाज में डालता है आपको. बात को समझिए सर. चीज इतनी, एक गरीब है, एक मुफलिस है, उसके पास सिर्फ एक होप है, इस चीज पे हम खामोश नहीं हो सकते हैं. और लोग रिलीजियोसिटी छोड़ रहे हैं, रिलीजन छोड़ रहे हैं सर. सर एक कमेंट क्या भी आया है, आप क्या जवाब देंगे मैं सर? एक जी मिनट. राजी, ये पढ़ते हैं. मैं सिर्फ इसके साथ जोड़ लूं कि कुरान भाई, हाँ, ये मैं आपकी जगह होता ना उधर, तो मैं एग्जैक्टली सेम, मुझे पता आज आप शायद इसको पता नहीं उस तरह कह रहे हैं कि कानून को हाथ में लिया जाता, लेकिन अगर मैं वहां होता तो ऐसे ही करता. आपने बिल्कुल ठीक किया था और आपकी नॉलेज ही परफेक्ट है. तो क्या करूं मैं, बोलिए. सर ये कानून को हाथ में लेने वाली बात मत बोले, मुझे हंसी निकल जाती है. जी जी जी. मैं कुछ जोड़ना चाहता हूँ उनके साथ. यू नॉटी राज. उन्होंने कहा कि नास्तिक बाबू कुछ बोलना चाहते हैं. हाँ, उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति धर्म को, ईश्वर को, अल्लाह को मानते हैं खुद के सुकून के लिए, तो खुद के सुकून के लिए वो मान भी सकता है. इसमें भी मैं समर्थन नहीं करता हूँ, क्योंकि देखिए, जो स्टीम कोहराम भाई जो स्टीम कर रहा है, राज भाई जो स्टीम कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका कोई मतलब, कोई उद्देश्य है? उद्देश्य तो यही है कि आप जो नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको सुकून चाहिए ईश्वर से, अल्लाह से, भगवान से, गॉड से. ये आपका झूठा सुकून है, झूठा विश्वास है आपका. क्योंकि आप सब कुछ कर सकते हो अगर आप समझो कि मेरा जो ईश्वर, मेरा जो अल्लाह, जो भगवान, ये मुझे झूठा तसल्ली दे रहा है, झूठा सुकून दे रहा है. इससे आपका दुनिया नहीं चलेगा. ये झूठा शांति को, झूठा उसका जो विश्वास है, इसको तोड़ने के लिए कोहराम भाई हम सब कर रहा है कि इसमें लोग हंसे ना रहे कि मैं तो ईश्वर पर विश्वास कर रहा हूँ, मेरे पे कुछ सुकून मिल रहा है. सुकून से क्या होता है? सुकून से दुनिया नहीं चलता है, समाज नहीं चलता है, अपना पेट नहीं चलता है. आपको सही रास्ता पर, अभी गरीब हो, अब अमीर हो, कोई बात नहीं,
आपको सही रास्ता पर जाना पड़ेगा। और जो आप जो कह रहे हैं कि विश्वास है मेरा, ये सुकून, मेरे दिल में शांति मिलता है, ये आपका झूठा से झूठा है। इसको आप छोड़िए, छोड़ के आप बाहर निकल आइए। ईश्वर कुछ नहीं करेगा आपके लिए, ईश्वर है ही नहीं। इसलिए आपको ये सुकून से, ये विश्वास से आपको बाहर आना पड़ेगा। थैंक लोगों यू को तो फॉरम सुकून भाई। तो नर्मली देने से भी होता है ना। एक हाँ, वो जमाने दारू में पीने थी से भी प्रथा होता है, ऐसी। गांजा दारू पीने से पीने भी से सुकून होता है। तो तो वो भी अलाउ कर दें। बिटवीन द टू सुकून्स, दारू पी के या विदाउट दारू पी के जो सुकून मिलेगा, विच सुकून वुड यू प्रेफर? नहीं सर, वो तो नर्मली देकर भी जो सुकून मिलेगा, अब तो हम अगर हायरार्की ऑफ एट्रोसिटीज डालेंगे तो बहुत आगे की बात है। हाँ Then ठीक है, we'll go लेकिन into this jalebi actually. I am actually you avoiding see a the jalebi. अच्छा, the thing is, ये जो भी बात की है कि false, I am okay, it's okay, let's take it as a false thing also, लेकिन false में भी 90% of the people are gaining some sort of peace. ठीक है, बेशक we are not discussing whether it's true or false, but the fact of the matter is that 90% of the people are gaining some sort of cushioning, some sort of peace, be it false Absolutely, I or be agree. it truth. ठीक I है, agree. I agree. right? तो उस Right. मैं इस आई डोंट वांट टू गो इनटू द फॉल्स और नॉट और ट्रूथ की बात कर रहा। ये है कि यू नो फेथ एंड होप, दे आर वेरी क्लोजली कनेक्टेड। सो होप, किसी की आप होप ले जाओ, let's not call it faith, let's say किसी का होप छीन लो, तो क्या होगा उस बंदे का? I think this is actually delusion and hope. You say faith brings more delusions. हाँ ठीक है, I'm not going to ये say कि it ये does not, कुहरम भाई, लेकिन एक सेकंड, ये होप नहीं है, ये बर्बादी है। इसीलिए भारत बिल्कुल। उपमहादेश के लोग बर्बादी पर उतरा है, क्योंकि मुझे किसी तरफ से दिल में शांति चाहिए। वो सब अल्लाह कर रहा है, मेरा बच्चा भी बीमार है, वो भी अल्लाह कर रहा है, समाज में जो कुछ हो रहा है अल्लाह कर रहा है, बस मुझे अल्लाह पर विश्वास है, गॉड पर विश्वास है, मैं सुकून से हूँ। इसी सुकून पर भारत का अभी अमेरिका इतना आगे क्यों गया, यूरोप इतना आगे क्यों गया? क्योंकि उस सही रास्ता पर काम करता है। लोगों को सिर्फ मन में शांति होने से दुनिया नहीं चलती है, समाज नहीं चलता है, देश आगे नहीं बढ़ सकते। यार ये झूठी तसल्ली, आप एक ये झूठी एक्सट्रीम की तसल्ली मैं बात नहीं कर मान रहे हो। सकता। वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ दोज एक्सट्रीम्स, ठीक है? आप किसी चीज को एक्सट्रीम पे ले जाओगे तो प्रॉब्लम होगा। मतलब टेक द बेस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड, यू टेक इट टू एन एक्सट्रीम, इट हैज नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देन, ठीक है? लेकिन ये क्या है कि नाउ यू, आई नो यू माइट नॉट एग्री विद दिस, लेकिन क्या हुआ, द वेस्ट एट वन स्टेज वर कंसिडर्ड बारबेरियंस, राइट? अब क्या फेथ क्या लेके आता है? अगर फेथ में ये दो चीज फैक्टर्स ना हो तो देन देयर इज नो सेंस ऑफ फॉलोइंग इट। द faith, like I would here talk of the Christian religion, gives you a sense of sharing and caring. जब वो सेंस ऑफ शेयरिंग जब एक किसी बंदे को मिले तो क्या है कि उसकी प्रोग्रेस में वो शामिल होती है। इंडिया एट वन स्टेज वाज फार अहेड ऑफ द वेस्ट, लेकिन क्या हुआ, एंड they were inventing stuff, they were doing this and that, लेकिन ये क्या टी, आई थिंक टी, योर T10, आपका माइक जरा म्यूट कर ले यार, बैकग्राउंड म्यूजिक जरा देख ले भाई पहले। आई गॉट योर पॉइंट मसीह let me मोमिन जी। complete, ओके ओके please. Okay, please, ओके please continue. प्लीज। तो क्या है कि इंडिया में क्या था कि इंडिया पीपल आर कमिंग अप विद डिफरेंट फॉर्मूलाज इन मेडिकेशन, लेट्स से। अब वो फैमिली ने अगर वो फॉर्मूला ढूंढ लिया तो उन्होंने कहा, ओ कीप इट टू योरसेल्फ, डोंट लेट एनीबॉडी नो ऑफ दिस फॉर्मूला। बना के देते रहे लोग जब तक उनके पास थे, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। अगर वो जनरेशन खत्म होगी, बेचारा वो फॉर्मूला भी खत्म हो गया, because they did not want to share that formula with other. अच्छा, क्रिश्चियनिटी ने वेस्ट की तरक्की का राज जो है वो सेंस ऑफ शेयरिंग में है और सेंस ऑफ केयरिंग में है, एंड दैट दे गॉट थ्रू फेथ। एक्चुअली दिस इज अ लिटिल इनकरेक्ट, पार्शियली आप सही है, पार्शियल आप गलत भी है इसमें। व्हाई आई टेल यू कि इन्होंने ही तो पूरी वेस्टर्न फिलॉसफी छुपा छुपा के रखा था।
एरिस्टोटल, सोक्रेटस, इन सब के ये सब किताबें तो पहले तो जब डार्क एजेस आए थे, क्रिश्चियनिटी की वजह से तो डार्क एजेस आए थे, और Of पूरा का course. पूरा जो रोमन और ग्रीक लिटरेचर था उसको तो उस जमाने में अब्बासियों ने ट्रांसलेशंस किए उसके. No, that of course. ये जो So where was religion. the sharing thing? The sharing was never there. And No, actually जो faith का मामला है, actually I want to say something. मैं छोटी से एक छोटा पॉइंट रख देता हूँ कि faith वहीं आता है जहाँ पे हम ignorant है किसी चीज के बारे में. अगर हम ignorant नहीं है, can you have faith about vaccine? आप सर्टन होते हैं चीजों के बारे में. फेथ जब भी आता है जब आप इग्नोरेंट है किसी चीज के बारे में. और कुछ हद तक है हम बहुत सारे चीज 1000 साल पहले हम जो इग्नोरेंट थे, आज हम उन चीजों के बारे में इग्नोरेंट नहीं है. तो मैं नहीं समझता हूँ कि भाई फेथ इज समथिंग दैट आई टेक इट विद it has a very negative connotation for me. you take it with a grain of salt, right? So, but you do अ, take it, right? कोहरम भाई जो Negative कह रहा था, connotation बोला मैंने. मेरा मकसद वही था। अगर हम फेथ पर रहे, दिल को शांति ले, हम अगर उससे, मेरा जो मुश्किलें है, मेरा देश में, मेरा समाज में मेरे से जो मुश्किलें है, उससे हम लड़ना ना सीखे, फेथ पर रहे, उसमें उसे होप मिले, विश्वास पे रहे, तो हम तो हजारों साल जैसे ही था भारत, हम तो वैसे ही है। इसलिए तो हम वैसे ही है। हम क्यों आगे नहीं बढ़ पाए? हम 150 करोड़ क्यों हो गया? और सर रेलवे स्टेशन पर करोड़ों बच्चा नास्तिक क्यों पड़ा हुआ है? जी, बोलिए। नास्तिक बाबूजी शुक्रिया। मैं ये कह रहा था कि एक बहुत देर से कमेंट लेने की कोशिश कर रहा था और उसी का जवाब आई वुड लाइक टू टाई दैट विथ फॉर आवर बसी सर. अच्छा. जी, शंकर मंडल राय जी ने कहा, कोहराम भाई कट्टर एथिस्ट मत बन जाना, क्योंकि नास्तिक लोग भी पूरा दुनिया में 10 करोड़ लोगों की मौत के घाट उतार दिया. तो ओके, तो मैं इसी को करना चाहता था. फर्स्ट थिंग, शंकर मंडल राय जी, बहुत शुक्रिया ये जबरदस्त कमेंट दे करके बताने के लिए कि कैसे इन्होंने ऐसा किया. तो मेरा यहाँ पर आपको एक छोटा सा सवाल है कि आपके पास ये फिगर है कि 10 करोड़ लोगों को एथिस्ट लोगों ने मार डाला इंसान की हिस्ट्री में. मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है कि आपके पास ये डाटा है कि धर्म युद्ध में, क्रूसेड्स में और गजवों में कुल कितने लोग आज तक मारे गए हैं? इसका डेटा आप लेकर के अगल बगल रख के देख लीजिएगा, आपको बात समझ में आ जाएगी. और मसीह मुस्लिम सर, आई वुड लाइक टू respond to your point with this. Only 2 lines. I would like to put my 2 cents. It's that आपने जैसा कहा कि हम इस चीज को एक एक्सेप्टेंस लेंगे और हमें ये चीज रखनी ही चाहिए. तो मेरा ये कहना है सर, I am all for having a book or having a person to guide or having a deity or an heavenly entity guide me or people to let them be guided, as long as that religion does not start treating me as something inferior, that religion does not start making things binary, or that religion does not start making things as either us or them. The moment it happens, it results in a danger to my life. So I don't want that only because of that. I'm all with you for what you have said. I'm all with you. Ab, correct me if I'm wrong. Let's take the case of India, right? India was की history ले लो तो has been ruled by Hinduism, has been ruled by Islam, and then came the white man and they ruled India. लेकिन अगर इंसान की what was the condition of the common man in the days before the white man came? They were peasant at the mercy of the landlords, whether it be Hinduism or whether it be Islam. अच्छा, जब when the Britishers came. जी जी. Masihi, actually, this is the problem. Whenever you speak about history, you whitewash it with single brush. ये मेरी भी प्रॉब्लम है, ये आपकी भी प्रॉब्लम है, ये सभी लोगों की प्रॉब्लम होती है. अब होता यह है कि हिस्ट्री इज वेरी वास्ट. मैं आपको बताता हूँ, लिच्छवी बोल के थे वहां पे एक जमाने में, नेपाल की तरफ और उत्तर प्रदेश की तरफ कहीं थे. दे वर एक्चुअली रिपब्लिक. उनको जो है गणतंत्र बोलते थे. एम आई राइट राज?
तो ऐसा नहीं था कि इंडियन हिस्ट्री जो है बिल्कुल एक ही तरीके की थी। यहाँ पे यही देश में टाउन प्लानिंग भी हुआ करती थी, मोहनजोदारो और हड़प्पन कल्चर होता था। बिल्कुल। तो जहाँ पे आप टाउन ये इस प्लानिंग के दायरे को, हाँ, आपको राम सर जो कहना चाह रहे हैं बहुत सही कह रहे थे कि मसीह मुस्लिम साहब, ये चीज है कि आप दायरा जो है ना इतिहास का बहुत छोटा ले रहे हैं। आपने कहा कि बिफोर दैट आपकी शुरुआत इतिहास की वहीं से होती है, गुलामी। व्हाट अबाउट द पीरियड बिफोर गुलामी? गुलामी आई मीन बिफोर द एक्सोडस और आर्म्ड इन्वेजन्स इनटू द इंडियन टेरिटरी। उस वक्त की इंडिया की मैप्स अगर आप देखें तो उस वक्त जो इंडिजिनस पॉपुलेशन और सिविलाइजेशंस थी, उसके आर्टिफैक्ट्स तो आज भी आप देख रहे हैं, द टेम्पल्स डाउन इन साउथ। Of course, एंड डोंट टेल मी, Mohenjo-daro and the other stuff. जी Yeah. जी, and don't tell me a bunch of peasants and ignorant people did that. No sir, those were highly skilled mathematicians and architects and engineers having lots and lots of tools and machinery. Ancient aliens नहीं आए थे कि नहीं पूरे नहीं पहाड़ नहीं को काट के मंदिर इवन बनाए। इजिप्शियन सिविलाइजेशन ले मैं वही लीजिए कह आप, रहा हूँ, मैं वही कह सब रहा हूँ वही। सर, मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो जो इंडिया की बात कही सर, तो हिस्ट्री को अगर आप बड़ा करेंगे तो इंडिजिनस पॉपुलेशन को लेंगे, तो ये एक ख्याल जो मन में हेलो, Yeah, I didn't get you. You cut कहीं off. फ्रीज्ड है। अच्छा, Please. फ्रीज हो गए शायद, वो फ्रीज हो गए शायद, शायद कट हो गए शायद। हमें आप कोशिश खुरम करनी है भाई, कि जहन से निकालना होगा। व्हेन वी टॉक अबाउट द कल्चर ऑफ इंडिया, वी आर टॉकिंग अबाउट द मैप ऑफ इंडिया 2000 years ago, which includes all those areas. So, It does not start from the period of invasion. तो उससे देखिए, पहले भी है जी। look, I'm actually just referring to that 2000 years of history. If I'm a big fan of National Geographics also. Have you guys watched the presentation by National Geographics, The Journey of Man? आप लोगों ने देखी है? हाँ, देखा है मैंने, उधर नेटफ्लिक्स देखो, पर है। it is beautiful. Actually, if you look at it, दुनिया में इस वक्त जो कुछ actually it started from of course Africa, according to अफ्रीका, them, came to India, द और लेडी लूसी। इंडिया से ही सब कुछ निकला। एक्चुअली इफ इंटेलिजेंस अगर देखो जाए तो it started from India itself, even through that channel. There was a And yeah, and I Masih Muslim sir. There was जी जी। a beautiful quote about what you are saying right now. It said, "Whatever great the Rome has शायद seen." सर की आवाज चली गई है, इंटरनेट का कुछ मसला आया है आई थिंक। हाँ हाँ Can you hear me? हाँ, जी हाँ, आप आवाज तो बट सुनाइए साफ आ ये रियाज रही जी। ये जो साफ आ होता रही है ना, हिस्ट्री जो बोल रहे थे ना, ये हिस्ट्री को भी बिफोर दैट एंड आफ्टर दैट दे रहे थे। अब हमारे पास एक इशू हो हाँ। गया है। अब हम क्या करते हैं ना, हमारी पुरानी हिस्ट्री के जो ग्रेट चीजें करते हैं ना, वो नरगिसी के आलम में आ जाते हैं। वी बिकम दैट हिस्ट्री बफ एंड वी बिकम दोस नार्सिस्टिक। ये देखो हम ऐसे थे। अब हम वही रोल मॉडल हम लेके आएंगे मशीन कब लर्निंग और एआई के सबमर्सिड हो, जमाने में। ये सबसे डेंजर मामला हो रहा है। ये कब सबसे भयंकर सबमर्सिड चीज हो। यही है। सब मुर्तिद हो तुम लोग। हम हमारा मोहनजोदारो का पास्ट हम लेके आएंगे। अब हम गुप्ता पीरियड लेके आएंगे। हम वो लिच्छवी वाले गणतंत्र लेके आएंगे। हम महान थे। ये बहुत बड़ा ट्रैप है भाई, ये बहुत बड़ा ट्रैप है। नास्तिक जी, आप क्या बोलेंगे इस पर? नास्तिक बाबू जी। मेरे ख्याल से उनका साथ जो बातचीत हो रहा है ये दोबारा हो रहा है। मेरे ख्याल से दूसरे को मौका देना चाहिए, एक ही बात बार बार घूम के आ रहा है। क्या कहते हैं खोराम जी? हाँ, नहीं, पॉइंट तो आ गया। फिर वो उनका एक पॉइंट था, वो हाँ वो तो है। आपका कुछ पॉइंट है क्या मसीह जी? एनीथिंग दैट यू वांट टू ऐड, एनीथिंग न्यू दैट यू वांट टू ऐड? I think so. You guys are actually taking me wrong. I'm talking of नहीं नहीं नहीं, we're not, basically we're the not. general public, or basic, and I'm going to exit with a sharing of something which I am putting down in and I'm looking to. I'll be putting this on one of the channels, and it's a song which I've written recently. Recently, kya? When I was about 2-3 years back, I wrote it. And is it okay if I share that with you? म्यूजिशियन से पूछ लीजिए, यहाँ पे है म्यूजिक वाले, यहाँ पर ही जी बैठे श्योर हैं, श्योर, उनसे प्लीज पूछ प्लीज प्लीज प्लीज, श्योर सर। And it goes something like this. जी सर। Please don't mind my voice. I don't have a very good voice, but it goes something like this. जी जी।
All of us are from Adam, be black, brown, or white. Got to learn how to live together, not to hate, let love abide. Got to learn how to live together, not to hate, let love abide. Diversity is a beauty you got to realize. Diversity is a beauty you got to realize. No matter what your race or religion, walk side by side. No matter what your race or religion, walk side by side. We got to learn that we are human. So ये है this. I'm working on this, and hopefully I'll complete this. Absolutely, absolutely, That is absolutely. what I say. Brilliant, brilliant. Very nice, very nice, very I would nice. have very made a nice. little naughty actually. मैं थोड़ा इसमें लूसी को डाल देता था इसमें. हम्म, The promiscuous Lucy, who was वो our हिंदी great सॉन्ग है ना सर, grandmother. मेरा फेवरेट है इस मामले में. कोई पूछता है ना तो मेरा फेवरेट वही सॉन्ग, एक हिंदी की बॉलीवुड का पुराना सॉन्ग है, आई ऑफन सिंग दैट. तो वो मुझे बहुत पसंद आता है. जैसे अभी मसीह मुस्लिम साहब ने कहा, तो मैं भी उसी You को said करता हूँ कि वो जी. you said you always sing that, so sing it for us, man. ओह अच्छा, तो वो प्लीज पार्डन माय वॉइस, तो गला फाड़ता हूँ. ये मेरा बहुत फेवरेट सॉन्ग है, आई ऑलवेज हिम इट. चलिए लेट्स स्टार्ट. मुसाफिर हूँ यारों, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना. ला 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 ला, बस चलते जाना. थैंक यू वेरी मच सर. Beautiful. Now you are a musician. Yeah, he's ये ऐसा है कि Wow. राज हम हमारे Yes, मेरे sir. चैनल पर यहाँ पे आपके चैनल मेरे चैनल पर स्ट्राइक लगेगा टिप्स वालों की तरफ से. आपने इतना अच्छा गाया कि सच में समझेंगे कि इन्होंने म्यूजिक चला दिया, Beautiful. नहीं, और ये सीधा कॉपीराइट लगाएंगे अब अपने. Raj, Yes, sir. you are a musician. You put music together. Yes, sir. I do. म्यूजिक Now, let me have your email because I'm willing to pay you for some of the stuff I've done. So that's not a problem. Oh, okay, not an issue, sir. It's in the private chat. मैंने दे रखा है सर, आप देख लीजिए. Yeah. His email is ganja Sir. ganja. Okay, get it. It's Yeah, there. yeah. I see it. Okay, then good. We'll who's be. the one who's singing right now? See, good. Who's singing right now? I was telling everybody about Raj sir's email ID. It's like अच्छा. ganja. करम जी with the heavy heart, बहुत माजरत, मैं मुझे बाहर निकलना होगा.